जय जगन्नाथ 301 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉलिटर क्वेश्चन गुड़ा डिस्कशन करबा अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म इज सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो या भितर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन को ग्राउंड रू लागि परिबो जदि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म। तो ये भितर आंसर हो सोभरनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर कहीं जो गोटे आसेम्बल होता है सपोज गोटे एग्जांपल हो खालिस्तानी गोटे डिमांड करुवा केते सपोर्टर से मैंने आसेम्बल करेंगे तो यही समय इंडिया जोटा इंटेग्रिटी और सोभरनिटी अच्छी से ब्रिज करने से ट्राए करपारती तो सही समय रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाए। नेक्स्ट 302 the right to form cooperative society was not part of the original constitution. It was added to article 19 clause 1 subclause c by which of the following constitutional amendment act? Answer होची 97 constitutional amendment act of 2011. Then 303 consider the following statements regarding the right to form trade union under the Indian constitution. Statement 1 कहूची the right to form trade union is explicitly mentioned in the text of article 19. No more need to double explicitly. The right to form trade union is explicitly mentioned in article 19 अच्छी तो यहाँ ठीक अच्छी फर्स्ट स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट had held that this right also includes the right to join right to not join any trade union or organization. तो यहाँ भी ठीक अच्छे माने जड़े चाहिए सी जॉइन करें न करें गोटे ट्रेड यूनियन को सेटा डिपेंड करे तो कई ये फोर्सफुली कहींपारे जे तुम ये ट्रेड यूनियन को जॉइन कर तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। देन 304 नंबर क्वेश्चन कहूँ द स्टेट कैन लीगली इम्पोज कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन ऑन ट्रेड यूनियनिज्म इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो स्टेट कौ जगह कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगे पार आंसर द स्टेट कैन पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड यूनियनिज्म इन आर्म फोर्सेस आउ पारामिलिटरी फोर्सेस पुलिस इंटेलिजेंस सर्विस एगुड़ा तो आंसर है ऑप्शन बी। देन व्हिच टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर कंसिडर नेचुरल कोरोलारीज और टू इच अदर। तो ये भीतर को फंडामेंटल राइट नेचुरल कोरोलाइज टू इच अदर हम। आंसर इज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी आ गोटे हूँ सब क्लॉज डी आ गोटे हूँ 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी कहूँ राइट टू मूवमेंट और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो सब क्लॉज ये कहूँ राइट टू रिजाइड एंड सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ आंसर हो राइट टू स्पीच एंड राइट टू असेंबल नुह राइट टू असेंबल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हाँ यहाँ हम राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रिजाइड और सेटल डाउन। तो आंसर हो सी। 306 नंबर क्वेश्चन कहूँ द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू रिजाइड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ग्राउंड। आंसरटा हूँ ऑप्शन ए इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब मान इंटरेस्ट रे से जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी और आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई ए दुटाकर एक्सेप्शन हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब मान एरिया रे से किछटा रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखे तो यही जगह से कहे जे सबुटी आप मूवमेंट करेंगे सबुटे रिजाइड करेंगे बट एम को स्पेशली गोटे प्रोटेक्शन दी जाए। नेक्स्ट in which of the following Indian state is a non-scheduled tribe or non-ST person legally restricted from purchasing the property of a scheduled tribe or ST person to protect tribal interest। तो ये आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन ने गोटे माने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बा स्पेशल राइट गोटे दिखाई गोटे स्टेट को जोटे कि गोटे जदि नॉन ST पर्सन अच्छी सी गोटे ST पर्सन ठू लैंड परचेज कर ना। तो आंसरटा हूँ झारखंड बिकज झारखंड गोटे बहुत ही बड़ ट्राइबल एरिया बा ट्राइबल स्टेट। तापर नेक्स्ट 308 नंबर क्वेश्चन द इनर लाइन परमिट ILP बा इनर लाइन परमिट अच्छी रिक्वायर्ड टू विजिट स्पेसिफिक बॉर्डर एरियाज लाइक द पैंगोंगसो लेक एंड नुब्रा वैली इज एन एग्जांपल ऑफ ए लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो पैंगोंगसो लेक और नुब्रा वैली ये दुटा एरिया अच्छे आम लद्दाख रे तो ऑप्शन सी हो आंसर। नेक्स्ट 309 ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक the government restricted the movement of individuals under article 19 the restriction was justified in the interest of what in the interest of the general public to restrict the spread of virus। तो कोविड वायरस को अटकाई एटा आर्टिकल 19 अंडर रे एटा गोटे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागिथिला। देन 310 अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्युपेशन द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट 1 कहूँ
prescribe professional or technician qualification necessary for the practicing of any profession. Statement 2 कहूची completely or partially exclude citizens from any trade, business, industry or services by regulating it. Select the following option. तो एठी आंसर टा हबो ऑप्शन सी both 1 and 2. आमर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कहूची राइट टू एनी ऑक्युपेशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. The state can make any reasonable restriction on this right for interest of the general public. आउ कौन ना तो state can make any law relating to the professional and technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business. आउ कौन हबो ना the state can also regulate any of the trade, business, industry or service either partially or completely ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ. तो यहाँ था आंसर. तो यहाँ था मोस्ट इंपोर्टाट 10टा क्वेश्चन जोटा मुझे डिस्कसन करदेली पूरा फास्ट रु आर्टिकल 19 पर्यंत जी भी इंपोर्टाट था मुझे प्राय सब कवर कर देछि. तो यहाँ था आज सेसन. जदि भल लगे लाइक शेयर करेंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.